In this session, we will look at the 2024 UPSC prelims paper. Now, I'm not going to tell you any trick or anything. मैं यहाँ पे बस वही बोलूँगा जो मैंने किया था 2024 के prelims वाले पेपर पे. Now, a bit of background. मैंने about 93 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और 61 करेक्ट हुए थे, 32 इनकरेक्ट, depending upon different answer key. So my marks varied between 95 and 102. I cleared prelims. Okay. अभी यहाँ पे एक जो बहुत इम्पोर्टेंट बात जो हमें देखने को मिलेगी वो ये है कि पीवाईक्यू एंड स्टैटिक पार्ट काफ़ी हद तक थीम बहुत रिपीटेटिव होते हैं. यू कैन क्लियरली लुक एट अ लॉट ऑफ repetition from earlier PYQ options only. Okay. And obviously the current affair part which everyone runs around और काफ़ी फोमो भी होता है लोगों को करंट अफेयर को लेके. बट जनरली स्पीकिंग जो भी करंट अफेयर होता है वो स्टैटिक से लिंक होके ही आता है. अगर हम ये पहला क्वेश्चन देखें डिलिमिटेशन कमीशन का, तो इट वाज इन न्यूज़ अलॉट क्योंकि 2023 में अराउंड दिसंबर या विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट में एक विमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ था, 106 अमेंडमेंट, जहाँ पे बात की गई थी कि आफ्टर डिलिमिटेशन इज डन तो द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट विल कम इनटू फोर्स. तो तब काफ़ी न्यूज़पेपर्स ने कवर किया था हाउ वी हैड हाउ मेनी डिलिमिटेशन कमीशन वी हैड, और चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड हो या हिंदू की हो. तो आखिरी डिलिमिटेशन कमीशन 2002 में बना था. 1971 में वो नंबर ऑफ सीट्स पर फ्रीज लगा दी गई थी. 2002 में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए आखिरी बार हुई थी. तो इट वाज ऑब्वियस 4 होने वाले थे आंसर. अदर टू वेयर 1951, 1961. एवरी डिकेडल सेंसस के बाद ये होता था. ओके. 1971 में फ्रीज हो गई थी. नाउ दूसरे क्वेश्चन पे अगर हम देखें तो दे आर टॉकिंग अबाउट 8 शेड्यूल, जहाँ पे हमें पता है कि लैंग्वेजेस होती हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज 22 है टोटल. नाउ दे आर स्पेसिफिकली आस्किंग 1992 के 71st अमेंडमेंट में कौन से लैंग्वेजेस ऐड हुई थी. नाउ दिस वन आई क्लियरली रिमेंबर्ड. मैथली वाज एडेड इन 2003. क्यों? क्योंकि ये पीवाईक्यू में था. लेट मी शो इट टू यू. ओके. इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर पीवाईक्यू, लुक, 2008 की पीवाईक्यू है ये. यहाँ पे 4 लैंग्वेजेस ऐड हुए थे. तो वन ऑफ देम वाज मैथिली आल्सो. ओके. ये 92 अमेंडमेंट एक्ट में हुई थी और ये 2023 में हुआ था. तो इट काइंड ऑफ क्लिक्ड. तो फोर्थ ऑप्शन अपने आप ही एलिमिनेट हो गया था. आई वाज लेफ्ट विथ 1 2 3. नाउ थर्ड क्वेश्चन में इट वाज, आई वुड से, मॉडरेट और इजी because we read about these leaders in post-independent India, modern history, even in the earlier chapters of Lakshmikant, polity में, जो overlapping part है modern history की. So it is a very clearly known fact that Dr. Shyama Prasad Mukherjee is associated with BJP and its earlier parent organization. Now regarding Rajagopalachari, if you read the modern history part and even Lakshmikant, you will know Rajagopalachari was kind of libertarian, or he was more tilted towards capitalist side of economy. तो वो उतना अग्री नहीं करते थे सोशलिस्ट आइडियल से. और इनफैक्ट आई थिंक उन्होंने
स्वतंत्र पार्टी नाम की एक पार्टी भी फाउंड की थी जो वन ऑफ द अपोजिशन पार्टीज थी कांग्रेस के अपॉन आवर इंडिपेंडेंस। तो ये क्लियरली रॉन्ग दिया हुआ था। एंड आचार्य नारायण देव, दैट नेम विल बी फाउंड अगेन इन दैट मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट स्पेक्ट्रम और एनसीईआरटी। सो ये एक्सचेंज किया हुआ था। तो आई वेंट विथ ओनली टू। नाउ फोर्थ क्वेश्चन वाज अ बिट चैलेंजिंग आई वुड से, क्योंकि ये डायरेक्ट फैक्ट है। नाउ वन थिंग आई विल लाइक टू मेंशन कि schedules, parts, these have been a very recurring theme. Not much about parts, but schedules though they ask a lot. तो ये तो in general we all prepare. Now schedules are only 10, so काफी प्रॉब्लम नहीं होती है। पार्ट्स काफी हैं, बट अगेन इफ यू लुक एट लक्ष्मीकांत, उन्होंने अपनी इंडेक्स को ही पार्ट के अकॉर्डिंग अरेंज करके रखा है। तो आई टुक अ लीप ऑफ फेथ हियर। 9A के बारे में क्लियरली पता था, क्योंकि एज यू कैन सी पार्ट 9 जो है वो पंचायत के लिए था, तो ऑटोमेटिकली 9A बिकम्स फॉर म्यूनिसपैलिटी। तो आई वेंट विथ माई गट एंड डिसाइडेड दैट all should be correct, and it paid off. Okay. Now, fifth question was not very much difficult. A bit of confusion I can understand हो सकती है, but फिर भी अगर हम words को ध्यान से देखें तो यहाँ पे they are asking about which one of the following will be correct as per the Constitution of India. Now, interstate trade and commerce. If you have read Lakshmikant or any other standard polity book, you know it is not under state list. और अगर थोड़ा भी डाउट है तो वी कैन अप्लाई अ बिट ऑफ लॉजिक। इंटर स्टेट मीन्स विद इन टू स्टेट्स। ओके, नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन बिटवीन टू स्टेट्स, अब उसको हम स्टेट लिस्ट के अंदर तो बिल्कुल ही नहीं रखेंगे। ओके, इट डजंट मेक सेंस। वी नीड अ थर्ड आर्बिट्रेटर, एंड ऑब्वियसली इन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क it has to be the central government. Okay, so that is why logically interstate relations and subjects under it should fall with the union government. Okay. By similar logic, interstate migration also does not need to be under the state list. And third one, interstate quarantine, they have given union, so I went with it. Okay, using the same logic. Now, right to privacy, a very easy question. Article 21 is put us on me. Now, seventh question में इन्होंने पूछा था that the chief of defense staff who has been appointed. I think we have second chief of defense staff right now. First one, former chief of defense staff, passed away in a helicopter crash. तो इनके बारे में कुछ facts दिए गए हैं. Now we have to select कि क्या correct था. Now it I would categorize it as another easy question because यहाँ पर if we look at the second statement, he or she exercises military command over the three service chiefs. Now it is a very obvious thing that President of India is the commander of all the three services. So there is no doubt about it that this statement should be eliminated. Now by eliminating it, we can get 1 and 3. Okay. बाकी दोनों आपको पता हो या ना पता हो, थोड़ी डाउट हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. Conceptually, if you know, President is the commander in chief of all the tri services, we can eliminate the option. Now, eighth question was a fact regarding current affair. I did not know that. I took a guess and ये गलत हो गया था. I'm just okay. Ninth question. Yeah, again a fact. Longest border geography.
इट अपियर्ड इजी बट अगेन कंफ्यूजन हो सकती है. समहाउ कभी स्कूल में पढ़ा होगा तो कनाडा एंड यूएस ध्यान में था. दे शेयर अ वेरी लॉन्ग बॉर्डर. नेचुरली दे आर वन ऑफ द टू लार्जेस्ट कंट्री ऑन द अर्थ. और उनकी नॉर्दर्न बॉर्डर काफी काफी ज्यादा जोग्राफिकली कनेक्टेड है तो. ओके. नाउ 10th क्वेश्चन. इट वाज लिंक्ड विथ करंट अफेयर आई वुड से, क्योंकि this hearing was going on about some MP from TMC. काफी कंट्रोवर्सी चल रही थी तब. तो ये काफी टेस्ट सीरीज न्यूज़पेपर्स में कवर हुआ था. दैट नाउ सेकंड स्टेटमेंट वाज क्लियरली रॉन्ग. ये काफी बार पूछा गया था काफी टेस्ट सीरीज में न्यूज़पेपर में भी. एंड इफ यू हैव फॉलोड दिस पर्टिकुलर केस यू आल्सो नो दैट बाहर के लोग भी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं. इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू बी अ मेंबर ऑफ द लोक सभा. ओके. So I went with elimination method and eliminated the second option. Okay. 11th question. It was straight from modern history and again Lakshmikant. I'm repeating it. Provisional president before Dr. Rajendra Prasad was elected unanimously or by majority by the Constituent Assembly. It was Dr. Sachidanand Sinha. You can look it up. It was there. And I think modern history के PYQ में भी था. और शायद नहीं भी होगा but I remembered it reading in Lakshmikant and modern history both. Next question was regarding Government of India Act. Now UPSC has been asking about GOI Act 3519, even 1947 Act, Indian Independence Act, or related the Chartered Act. All these are very standard and expected line of questioning. तो यहाँ पे भी बहुत सरप्राइजिंग नहीं था. अब if you look at the statements that they have given us, so first one was regarding the All India Federation that they proposed, and obviously we all know ये implement नहीं हो पाया था. It was not implemented, but again it was there. Now if you look at the second statement, defense and foreign affairs, they have said that defense and foreign affairs was kept under control of federal legislature. Now we all know that British kept the control of defense and foreign affairs with them, and by them I mean with the governor. So they are not going to give that to elected representative of the legislature because तब तक Indians भी आ रहे थे legislature में. Okay, so it was clearly wrong. If you have been following PYQ and even if you have read it once, you will know that this is a wrong statement. So one only. 13 was ancient history. I am not very good at it. और ये 13 I marked wrong. 14th I didn't attempt, so we'll let it be. Now 15th was a straightforward current affair, or if you want, art and culture regarding World Heritage List by UNESCO. ये भी काफी टेस्ट सीरीज में आ रहा था क्योंकि 2023 में ये न्यूज़ में भी था काफी हद तक. तो इट वाज स्टैंडर्ड आई वुड से. यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये हुई काफी लोगों के साथ दैट दे मिस्ड दिस कीवर्ड. हाउ मेनी वेयर included in 2023. Okay, this was the keyword here. Now, if you look at all the four options that they have given to you, सभी added है list में. Okay, Shanti Niketan and the Hoysala temple were added in 2023. These were very much in news. So only two. काफी लोगों ने ये only all four मार के आया था क्योंकि वो ये 2023 वाला पार्ट मिस कर चुके थे. तो ये थोड़ा एक ब्लंडर था काफी लोगों के पार्ट में. Now 16th is another static question regarding the Article 368 power to amend the Constitution of India. अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि by
under Article 368, what can be done? What all can be done? Addition, variation, or repeal. Now, if you just apply your logic, anything can be done. Because अगर कोई एग्जांपल ही लेना है तो आप देख लो, हम काफी कुछ ऐड करते हैं. फॉर एग्जांपल 10th शेड्यूल ऐड हुआ था. अभी रिजर्वेशन हमने ऐड की है 106th अमेंडमेंट में. वेरिएशन वेरिएशन हम करते हैं. फॉर एग्जांपल नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू द पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट हैड समथिंग अबाउट टू एंग्लो इंडियन का प्रोविजन एक होता था, वो 102nd अमेंडमेंट से वो हटा दिया गया था. एंड रिपील तो ऑब्वियसली वी कैन डू इट, सो नॉट मच डिफिकल्ट. 1 2 3. 17th was again current affair. I got it wrong. I didn't look at the options very carefully. यहाँ पे पूछा गया था कि कौन से कंट्रीज जो हैं वो न्यूज़ में रहे थे ड्यू टू डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन एंड टीएफआर. तो जापान एंड साउथ कोरिया वी ऑल नो. आई मिस्ड इटली, सो ये रॉन्ग हो गया था. 18th was a bit difficult for me, but it was not unexpected. If you remember 2023 में मनी बिल के ऊपर काफी एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, which is under Article 110. नाउ ये काफी कंफ्यूजन यहाँ पे हो रही थी बिटवीन, मतलब if option 1 is correct or not. So I went with 2 and 3 only. Now fourth one everyone had eliminated, so वो कोई प्रॉब्लम नहीं था. ये 1 के करेक्ट होने पे डाउट था 50-50 का. I went with assuming 109 will not be correct, तो वो रॉन्ग हो गया. 19th I had no idea. I didn't even try, so मैंने छोड़ दिया था. They all coachings are apparently thinking that 2025 में this format of question will be found a lot. So okay, we will see. Now this question, Northeastern Council. Again one of the, I would say, क्वेश्चन जहाँ पे आंसर्स काफी वैरी कर रहे थे. नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में यहाँ पे दे हैव आस्क्ड कि अमेंडमेंट जो 2002 में हुई, आफ्टर विच उनके काउंसिल में कौन कौन मेंबर है. नाउ आई हैड अ वेग मेमोरी ऑफ NEC बिकॉज आई यूज्ड टू मेक न्यूज़पेपर नोट्स व्हेन आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग इन 2022. तो वहाँ पे one of the first few things that I wrote down was about the Northeast Council. They had discussed about it, that chief minister was added and the nominated members were added and governor also was added as a member. So 1 2 3 I was sure. Regarding fourth, I went with logic that it is a very kind of sensitive place, so home minister has to be there, and after coming to my home I checked, he is the chairman of that council. So 1 2 3 4. Many coaching are giving 1 2 3 only, apparently because they are giving the answer based on assumption that यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि 2002 में किन लोगों को ऐड किया गया था, बट द क्वेश्चन इज क्लियरली आस्किंग अबाउट इस अमेंडमेंट के बाद कौन कौन मेंबर्स हैं. तो आई थिंक आंसर शुड बी 1 2 3 and 4. एनीवे आई हैड टेकन इट एज माय रॉन्ग आंसर. नाउ 21 अगेन अनएक्सपेक्टेड लाइन, काफी न्यूज में था regarding 106th amendment, नारी शक्ति वंदन अधिनियम. it provides it provides 33% reservation in Lok Sabha and state legislative assembly. Okay, now as we discussed in first question that the provision are to be implemented after delimitation whenever it happens. It was one of the key feature in the act itself. Now the first statement is provision will come into effect from 18th Lok Sabha.
Now, 2024, 2024 was a year of general election. 2024 में we elected, इनफैक्ट हमारा एग्जाम भी डिले हुआ था इसके कारण, we elected the 18th लोक सभा. So it is a wrong option. इसके प्रोविजन 100 आफ्टर डिलिमिटेशन आने वाली है, तो वन एलिमिनेट हो रहा था, 2 and 3 are correct. Even if you do not know, just by eliminating one you can do this question. Now 22 Mitra Shakti military exercise 2023. Again, these type of questions are generally not expected in UPSC, but they have asked. Now it was in news, passing by, reading newspaper, I had read. So one thing I definitely knew was it was not between India and Bangladesh. So that helped me, and I went with it and marked 2, 3, and 4. Other three I was not very sure, but one was I was definitely sure it was not between India and Bangladesh because उसका नाम मुझे कुछ और याद था. अब ये भी नहीं पता था कि किन दोनों के बीच में थी. तो अगेन इट हेल्प जस्ट नोइंग दैट ये दोनों नहीं है, एंड आई गॉट इट करेक्ट. 23, इट वाज रिगार्डिंग रेड प्रोहिबिशन. आई वुड से वेरी इजी क्वेश्चन, काफी बार पीवाईक्यू में देखा हुआ है एंड स्टैंडर्ड रीडिंग में मिल जाता है ये. तो it is about the prohibition higher courts put on lower courts. Okay. Now 24th, I would say uh, difficult or medium question, if you may. It says that statement 1, governor of a state recognizes and declares any community of that state as a scheduled tribe. Now it is clearly wrong. It is President of India who maintains the list, and only she has the power to do so. Okay, it is a known fact. Now, second statement, a community declared as a scheduled tribe of in a state need not be so in another state. If you observe your surrounding, so that you can understand, because unlike the OBC list, if I'm not wrong, there is no state-wise list of scheduled tribes. Okay, it is just one list. So logically, it should be correct. So I went with 2 only. Okay. Now, 25th question. It was about the union budget. Now, the first statement itself, the Union Finance Minister on behalf of the Prime Minister lays annual financial statement. That is clearly wrong. In this paper, if you remember, they have indirectly asked a question about president only. Okay. Here also, everyone, even the finance minister, is doing on behalf of president, because president is the constitutional head of the state. They are working on behalf of her only. So one was wrong. And अगर आप ये भूल भी गए हो तो आपको याद दिलाने के लिए सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पे. At the union level, no demand can be made except on the recommendation of President of India. Okay. So ये काफी लॉजिकल क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल था, नॉट मच डिफिकल्ट. Now, book and authors are not generally expected again in UPSC, but फिर भी उन्होंने पूछा. But if you are not living under a rock, काफी फेमस बुक है ये, द इंडिया वे, बिकॉज डॉक्टर जयशंकर इज वन ऑफ द पॉपुलर पॉलिटिशियंस इन इंडिया, वेरी पॉपुलर इन फैक्ट. सो ये किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट, अगर उनका ऑप्शनल पीएसआईआर है, नहीं भी है तो उनके टेबल पे आपको दिख जाएगा, अगर वो पढ़ रहे हैं तो भी, नहीं पढ़ रहे हैं तो भी. तो इंडिया वे, भारत मैटर्स वाज, ही वाज डूइंग अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज रिगार्डिंग दिस बुक इन 2023. तो ये नहीं भी पता है तो द इंडिया वे इज वेरी पॉपुलर, इट वाज रिटन इन 2020. तो that's Jayashankar. Now, more or less, we have seen all the
पॉलिटी क्वेश्चन, बाकी हम अगले बार देखेंगे। तो यहाँ पे कंक्लूजन ये होता है कि फॉर प्रीलिम्स इन एवरी ईयर two things are very important. One is obviously static part. You have to revise it as much as possible. Another, PYQ. No matter how much you give different coaching papers or anything, you have to do multiple rounds of PYQ. It helps you understand the language of UPSC and give you an idea कि actually question कैसे आते हैं। तो ये काफी हेल्पफुल है। और थर्ड जो मतलब मेरा अपना मानना है वो है कि करंट अफेयर के पीछे ज्यादा भागना इज नॉट वेरी एडवाइजेबल। करंट अफेयर शुड बी डन इन अ ऑप्टिमम मैनर एंड आई पर्सनली थिंक न्यूज़पेपर आर अ गुड वे। बाकी पेपर में भी दिखेगा ये, क्योंकि काफी ग्रेजुअल लर्निंग होती है न्यूज़पेपर पढ़ने के थ्रू, और काफी राउंड ऑफ रिवीजन भी होते हैं न्यूज़पेपर अगर आप कंटिन्यूअसली देख रहे हो तो। नाउ इफ यू आर डूइंग मैगजीन्स, काफी लोगों के लिए वो वर्क करता है, बट पर्सनली आई फेल्ट न्यूज़पेपर हेल्प्स यू अ लॉट। मेंस में तो काफी हेल्पफुल है ही, प्रीलिम्स में भी आप देख ही रहे हो कि काफी हेल्पफुल है। रेस्ट वी विल से अगली बार। आई होप यू फाउंड इट यूजफुल एंड आई माइट हैव explained something wrong. You can correct me.